alarming, but situation on ground is even more alarming. There's a spike in coronavirus cases being reported from rural Punjab and Haryana. Several villages have been turned into containment zones. There's a rise in the death toll. India Today has accessed a Haryana government report that links the rise of the cases and the deaths to the protests. Farmers who are agitating at the borders and then returning home by rotation are bringing more cases of COVID to rural Punjab and Haryana. Manjeet Sehgal with this report. 200 days. That's how long the farmers' protest has been raging on. And despite a deadly COVID second wave, the protesters are in no mood to relent. Now, a report accessed exclusively by India Today reveals that the farm stir created COVID hotspots. Kisan Mahapanchayats and Andolans that were held across the states of Punjab and Haryana led to a huge spike in coronavirus cases. Punjab's Bhundar village has been sending a batch of 6 farmers every week to the capital's borders to protest against the 3 farm laws. The village has now been declared a containment zone, with over 138 farmers found to be COVID positive and 6 deaths being reported within a week. There are a dozen such villages including Fapre Bhaika, Joga and Lohgarh that have also been declared containment zones. The story is no different in Haryana. A state government report on COVID infections in villages accessed by India Today found over 804 deaths in 22 Rohtak villages, which are located within 100 kilometers from 3 protest sites. Over 45 villages have been declared containment zones in Haryana. किसानों से अपील की जा रही थी कि आप बॉर्डर्स पर बैठे हैं, वैक्सीनेशन करा लीजिए, हरियाणा सरकार आपकी मदद करे। सब बातें तो हमारी अपनी है प्रदेश की, लेकिन जो केंद्रीय नेताओं से मेरी बातचीत हुई है इस संदर्भ में सारे विषयों की जानकारी उनको दी है और इससे सारी बातों को तो एक प्रकार से अवगत कराया गया उनको और सब धैर्य रख करके हम आगे बढ़ेंगे। 10 Haryana villages have witnessed over 239 mysterious deaths in 2 weeks. These villages are located in Hisar, Rohtak, Sonipat, Bhiwani and Jhajjar districts. जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है तो हमारे हुगली एरिया का जो बुराई एरिया है इसमें भी केसेस बढ़े हैं और बाकी जो हमारा गन्नौर और कोहना का एरिया था इनमें भी केसेस थे। वैक्सीनेशन वहाँ पे स्टार्ट की गई है तो अभी 2200 के आसपास वहाँ पे वैक्सीनेशन तो कराई। जहाँ कहीं भी मिक्सिंग है वहाँ डेफिनेटली ये तो है कि वहाँ केसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। At the Tikri border, 2 protesters have already died due to COVID-19. Bharatiya Kisan Union Chief Jogendra Singh Ugrahan himself tested positive in March. Several protesters are symptomatic but are refusing to get tested. डेड बॉडी आई थी बलबीर सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह, कुंडली फार्मा एजुकेशन साइट से आई थी, कल रात को आई थी। पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि उसका कोविड-19 टेस्ट किया जाए तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में बॉडी पॉजिटिव आई है। हमारे 400 के करीब किसान उनकी डेथ हो चुकी है, सभी का आज तक पोस्टमार्टम हुआ है, किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं आया और अब सरकार का एक षड्यंत्र है, सरकार की एक चाल है। किसान को बुखार हुआ ही नहीं तो पुलिस क्यों लिख रही है कि इसको बुखार है 2 दिन से और जानबूझकर ये लिखने के बाद जहाँ पे उसका मतलब कोविड टेस्ट करवाया, जानबूझकर उसका कोविड को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए। Besides the crowds at the Delhi border protest sites, over 15 major Kisan rallies, Mahapanchayats and political rallies also contributed to COVID surge. Protesters and farm union leaders fear that the stir will lose its steam if it's called off. But can it continue at the cost of rising infections and deaths due to coronavirus? With Manjeet Sehgal, Bureau Report, India Today.